ओके, सो आज हम पढ़ेंगे भजन संगीता 36, Psalm number 36. As soon as you open the Psalm, you can see the heading, how precious is your steadfast love to the choir master of David, the servant of the Lord. So Psalm number 36 is a profound and multifaceted composition that juxtaposes the depravity of the wicked with the steadfast love and righteousness of God. As you read this psalm, we can identify the Psalms 36 verse 1 starts by saying how wicked people are. बुरे लोग या दुष्ट लोग कैसा है और लोग क्या सोचते हैं करके भजन संगीत शुरू हुआ, और नीचे आते आते आप देख सकता है परमेश्वर धर्मी है, वो कैसे न्याय करेगा उसके बारे में लिखा है, और हेडिंग ऊपर लिखा है, टाइटल लिखा है द साम बिलोंग्स टू डेविड. Traditionally attributed to David, the psalm stands as both a moral reflection and a theological meditation on divine faithfulness. It moves from a description of human sinfulness to a celebration of God's mercy, justice and providence. So the psalmist starts by saying how wicked people are growing, how their life is, and what they are thinking, what they are doing, and about them, about what are their characters, and all these things he mentioned. But coming down to verse 5, we can see the heading reflects there in verse 5. Read verse 5 and just have a look to the heading. You steadfast love, O Lord, extends to the heavens. So after explaining about how the wicked people are growing in the society, he speaks about the divine nature or righteousness of God, the steadfast love of God on those who have a good heart, or those who are living according to the will of God, or those who reject evil. So as we have studied the other Psalms of David, sometimes he starts with a prayer, cry, lament, but see, this psalm is also different. As we studied yesterday, it directly starts by saying how wicked people are growing, और बुरे लोग कैसा है करके शुरू करके नीचे आते आते वचन नंबर 5 में परमेश्वर अच्छा लोगों को क्या करेगा, वो कितना धर्मी है, उसका प्यार कितना है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया. एंड Psalm number 34 bears the superscription, which means heading to the chief musician, and it is written servant of the Lord. परमेश्वर का और दाऊद के बीच में रिश्ता क्या है दिखाने के लिए वो हेडिंग को हम उपयोग कर सकता है, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. वो एक किसके बारे में बता रहा है, भजन संगीतकार या साल्टर, खुद के बारे में, खुद की पोजीशन क्या है पढ़ने वालों को दिखाने के लिए हेडिंग में लिखा है सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. हु इज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Psalm number 36? King David. So even though he is a king, he is praying to God and he identifies himself as a servant, and there is no historical background directly you can take out from this psalm. जैसा अब्शलोम या शाऊल या बत्शेबा या कोई होगा, दाऊद का यह संदर्भ में गाया गया था या गीत इसको भजन संगीत में लिखा था करके नो हेडिंग. बट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ Psalm 36 इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, बट द इंटरनल एविडेंसेस, अंदर वचन में कुछ कुछ सबूत है, वो सजेस्ट a time of moral and social corruption. I think we have come across same kind of a psalm. Which one is that? I think Psalm number 16. 16 or 12? 12. मतलब दाऊद के जीवन में कौन सा संदर्भ में लिखा गया करके डायरेक्ट सबूत तो नहीं है, लेकिन समाज में बुरे लोग बढ़ रहे थे. In the society, wicked people are growing, and they are more and more they are developing, or they are growing. At the same time, David is asking to God, what about the righteous people, those who are walking according to the will of God, and how they will be treated if they walk according to the will of God, according to the commandment. Read verse 6. Your righteousness is like the mountain of God. Your judgments are like the great deep. Man and beast will share road. 7. How precious is your satisfied love. So here in the midst of this wicked society,
unrighteous, which means they are people are continuously they are doing wrong things, sin. They are continuously sinning, and people are becoming wicked in their character. Then David is asking God, as it is written in I think 12 or 13, जहाँ विश्वासी लोग कम हो रहे करके 12 में होगा. So in the same way he is praying. This is a prayer, and in midst of prayer he is explaining about how wicked people, how their character is, and how God is going to attack them, and how God is going to protect his people, those who are walking according to the commandments of God. So there is no direct evidence about any historical context. But as you read, you can see enemies are growing, good people or those who are righteous people are very less. So David is asking God, what will be there? What will be the situation of a righteous people or righteous man or woman in the midst of this wicked people? करके प्रार्थना कौन कर रहा है? Maybe when David went through some personal crisis, it affected to the nation also. दाऊद उसका खुद का जीवन में कुछ परेशानियों से गुजर के जा रहा था, तब उनका नेशन, उनका राज्य में भी इसका प्रभाव आया था, तब प्रार्थना किया होगा. The Psalms contrast between human wickedness and divine goodness. So there is a literary device you can see in this psalm, contrast between two different characters, the divine nature of God and the wicked nature of human being. इधर तक समझ आया? So there is not in a direct evidence about the historical context, but it speaks about the internal evidence. Speaks about it was written by David during a time when nation was going through a big crisis. Maybe when David was running here and there, nation gone through kind of a struggle and crisis. Maybe at that time he might have wrote. But some scholars even says 35 and 36 has connection. Just look there. Read 35 ka 28. Then my tongue shall tell of your righteousness. How it is connected? In the last verse of 35 speaks about tongue. Tongue means speaking. Then read 36 verse 1. Congregations speak to the wicked deep in his heart. So somewhere there is a connection. एक अच्छा व्यक्ति क्या बोलता है और एक बुरा व्यक्ति क्या बोल रहा है करके, है ना. 35 का लास्ट वचन में क्या लिखा? How a righteous man will speak. And 36 verse 1 speaks about how a wicked man is thinking even in his heart. So maybe this is a continuous prayer. We got it in different chapter number 35, 36. समझ आया? Some scholars say it is connected together. It's a single prayer. एक ही प्रार्थना है. कंटिन्यू 35 से लेकर ऐसा जाते हैं. Literary structure or division 1 to 4. Yeah, 1 to 4 speaks about how wicked people are growing, and how it speaks about the explanation about the wicked people and moral corruption. समाज में लोग कैसा बिगड़ गया करके वर्सेस 1 to 4 में एक्सप्लेनेशन दिया है. समझ आया ना? सेकंड डिवीजन 5 to 9. The exaltation of God's steadfast love, faithfulness, righteousness and justice. ऐसा वाला लोगों के बीच में परमेश्वर उनके न्याय कैसे करेगा, उनके प्यार अच्छे लोगों को कैसे दिखाएगा करके 5 to 9 में लिखा है. Then 10, 11, 12. A prayer for continued divine protection. मतलब ये बुरे वाला समाज कैसा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर आप और हमारा मतलब अच्छे इंसान को, धर्मी व्यक्ति को संभालना करके एक प्रार्थना से भजन संगीत शुरू होता है. सो व्हाट इज द ट्यून ऑफ दिस सॉन्ग? इट स्टार्ट्स विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ द विकेड एंड द मोरल corruption, and it speaks about steadfast love of God, and it ends by saying, God, even though this is taking place, you continually protect the righteous people. So this is the tune. Just like in other psalms, it starts with lament and it ends with word of hope and confidence. It is entirely different. It starts with the contextual situation. Then it ends by saying, even though situation is like this, God, you protect us continually.
समझ आया? So the tune of this psalm is entirely different. So literary features or the literary devices which is used in this psalm, parallelism. You verse 5 में देखना, for example, your steadfast love, O Lord, extend to the heavens, your faithfulness to the clouds. So both have same meaning but in different words. That is mean by parallelism. It looks parallel but different wording. Imagery, verse 9, fountain of life. उसका हिंदी क्या है? पानी का, नॉट माउंटेन, फाउंटेन ऑफ लाइफ, पानी का बहाव आने वाला शुरुआत. वर्स 9 पढ़ना, वहां लिखा है क्योंकि जीवन का सोता, जीवन का सोता. That is an imaginary, then imagery, then light. One more imagery, contrast. Contrast. किसी का मोबाइल इधर है क्या? Is there anyone having mobile here? Except Sange. People and righteous people. So that is one more literary devices which is used in this psalm. Then personification, one more new thing. Personification. Evil is personified as speaking within the heart of the wicked. So इधर evil का हिंदी क्या है? डायरेक्ट दुष्ट लोगों को उनके बारे में बताने के लिए वर्ष 1 में लिखा है, क्या लिखा? ट्रांसग्रेशन. और दुष्ट लोग का बारे में बताने के लिए और दुष्ट लोगों को एक शब्द में पर्सोनिफाई किया, ट्रांसग्रेशन. समझ आया? ये दुष्ट लोगों को दिखाने के लिए ट्रांसग्रेशन करके शब्द को वहां यूज किया. दैट इज ऑल्सो वन मोर लिटरेरी डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन करके बुलाता है. देन या दैट इज ओनली वन थिंग. सो विकट लोग कैसा है और लोग उनका मन का अंदर क्या करेगा करके बताने के लिए शब्द को यूज करके वो पर्सोनिफाई किया. Those who think like this, they are transgressors. So it is kind of personification. एक शब्द को लेकर और शब्द में इंसान को दिखाना. समझ आया? Taking one word and if you read that word, you can see a group of people in that word. Those who speak evil, they are transgressors. समझ आया? So one more literary device, that is personification, suggesting that sin is not merely external behavior but an internal corruption of conscience and perception. Even सोचने में बुरा सोचने वाला करके और बुरे लोगों, दुष्ट लोगों के बारे में बताया. एक शब्द को यूज किया, ट्रांसग्रेशन. मतलब ऐसा लिखा है, ट्रांसग्रेशन स्पीक टू द विकेड. हिंदी में क्या लिखा? अपराध लिखा. पढ़िए पहला वचन का पहला सेंटेंस. जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यहाँ मेरे लिखा है, मेरे लिखा है, किस लिखा है? दुष्ट जन का. अरे जो कोई हिंदी बाइबल है थोड़ा अच्छा से पढ़ो. मेरे दुष्ट जन का अपराध मेरे भीतर यह करता है कि परमेश्वर का नहीं अच्छा से पढ़ो. दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह करता है. मेरे लिखा है. आई थिंक इन इंग्लिश देयर इज नो मेरे. हिज हार्ट लिखा है. 36 पढ़ के देखिए. ट्रांसग्रेशन स्पीक टू द विकेड डीप इन हिज हार्ट. कौन सा बाइबल लेके आया? या मे बी इंग्लिश, हिंदी वाला इधर से ट्रांसलेट किया होगा. तो मोस्टली द करेक्ट ट्रांसलेशन काउंट्स ट्रांसग्रेशन. दुष्ट जन का हृदय का अंदर ऐसा बातें कर रहा है. इधर ट्रांसग्रेशन इज नॉट ए पर्सन बट उसका एक पर्सन की समान बात करने वाला लोग, मतलब जीवी कौन सा है? इंसानी है. मतलब ट्रांसग्रेशन करके शब्द को लेकर एक इंसान का रूप में पर्सोनिफाई करके लिखा. ट्रांसग्रेशन स्पीक टू द विकेड इन हिज हार्ट. क्या बात करता है? देयर इज नो फियर ऑफ गॉड. सो ये पर्सोनिफिकेशन क्या समझ आया?
वो झुंड के बारे में, वो इंसान के बारे में बताने के लिए एक ऐसा शब्द को लेता है हम, उस शब्द में इंसान को पर्सोनिफाई करता है। समझ आया नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं ये फिट होगा नहीं, दीपक इज ए लायन, और लायन में दीपक को पर्सोनिफाई किया। वो झूठ मैंने बोला ऐसा समझने के लिए, समझ आया? वो लायन को वहां एक इंसान की तरह, कौन है वो क्यों बताया? शायद वो दीपक को और लायन की समान शक्ति, या उनको देखा तो लोग डरेगा, उनका आवाज उतना बड़ा है, मतलब वो लायन को पर्सोनिफाइड इनटू दीपक। वैसे ही इधर ट्रांसग्रेशन करके शब्द को लेकर that the Psalter took the sound, the term, the word transgression and converted into, personified into a group of people who speak in their heart what they will speak. There is no fear of God. So this is also one more idea, literary devices. Then the exegesis, verses 1 to 4 for nature of the wicked, not exegesis. ऊपर ने हम इधर देखा है वही है, उसको और थोड़ा एक्सप्लेनेशन में। वर्सेस 1 to 4 नेचर ऑफ द विकेड, एक विकेड इंसान का क्वालिटीज, गुण के बारे में लिखा। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर कौन है, उनका स्वभाव क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है करके लिखा। सो फर्स्ट पार्ट स्पीक्स अबाउट 1 to 4 नेचर ऑफ द विकेड। सेकंड पार्ट यू कैन इजीली राइट नेचर ऑफ गॉड। नेचर ऑफ गॉड एट्रीब्यूट्स मतलब क्या है, परमेश्वर के बारे में, उसका गुण के बारे में बता रहा है। सो नेचर ऑफ गॉड इजली यू कैन डायरेक्टली राइट। देन वर्स 5 स्टेडफास्ट लव, उसका हिब्रू शब्द लिखा है हेसेद, हेसेद स्टेडफास्ट लव। फेथफुलनेस वर्स 5 यमुना, वो साउंड करेक्ट है नहीं मुझे पता नहीं, इंग्लिश में देखा था ये मूव ना, फेथफुलनेस। देन गॉड्स राइचियसनेस वर्स 6, देन वर्स 6 गॉड्स जजमेंट। सो ये परमेश्वर का कैरेक्टर, नेचर के बारे में वर्स 5 और 6 में लिखा है। देन वर्स 7 to 9 as a response to the nature of God, how we should respect him, how we should worship him. Verses 7, 8, 9 speaks about as a response to the divine nature of God, how we should respond to that divine nature. हमारा प्रत्युत्तर क्या होना है, वो होना है आराधना स्तुति। वो कहाँ लिखा? Verses 7 to 9. Then 10, 11 and 12 a prayer for preservation and justice. In some other psalm also David used this word preservation. कौन सा वचन संगीता था? Preserve me O Lord करके वचन शुरू होता है। Verse Psalm number 16. So David is praying that even though in the midst of all these wicked people, in this wicked society, God, you preserve us. What is meant by preserve? अभी ऐसा होगा, प्रिजर्व करके लिखा, तो जब समय होगा तब हम बाहर आ सकता है, जैसा आचार को प्रिजर्व करके रखता है। देन थियोलॉजिकल थीम्स, द डिप्रेविटी ऑफ ह्यूमैनिटी, लोग कैसा बिगड़ गया, पहला 4 वचन में बताया। द डिप्रेविटी ऑफ ह्यूमैनिटी, लोग कैसा बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ गया करके वचन में बताता है। पॉइंट नंबर 2 the attribute of God or the nature of God. The attributes of God or divine nature of God. Then 3 divine providence and universal care. परमेश्वर हमको कैसे संभालेगा और सबको कैसा संभालेगा। यूनिवर्सल मतलब सिर्फ एक झुंड को नहीं, सारा सृष्टि को कैसा। Then 4 the fear of God. The fear of God. Here fear has a meaning, in different meaning. जैसे डर के फिर वहां वापस नहीं जाने का मतलब नहीं, परमेश्वर का कैसा आदर देना, how we should respect, how we should be humble in front of God.
Then the fountain of light, life and light. रोशनी का स्रोता एंड पानी, जीव जल का स्रोता. सोता और श्रोता, स्रो स्रो, SRO. Point number 6, the divine justice and eschatological hope. Divine justice and eschatological hope. Psalm number 36 in the context of Psalter. ये भजन संगीतकार का कॉन्टेक्स्ट में जाकर थोड़ा हम इस भजन संगीत के बारे में सोच के देखा तो कैसा वाला संदर्भ में वो है. उनके सामने ही पूरा समाज बिगड़ते जा रहा है, जो बिगड़ गया है वो लोग बढ़ते जा रहा है. विश्वास या वचन को लेकर परमेश्वर का विश्वास करके जीने वाले लोग बहुत कम लोग हैं, उनको जीना मुश्किल हो गया है. तब उन लोगों के लिए इस भजन संगीतकार इस भजन संगीत को लिखा. अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉल्टर, व्हेन ही ओपन हिज आईज एंड सी द सोसाइटी, many people are wicked and the society is getting corrupted and very less people are living according to the will of God, and he is asking God, what about these people in the midst of this wicked society? And he is making the statement, yet even the situation is like that, my God will take care of them and God will preserve them. So he is asking for God's preserving care and character in the midst of all this मुसीबत या परेशानी के बीच में प्रार्थना कर रहा है. समझ आया? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑथर कौन है? सो इस जो भजन संगीत को आप लोग भजन संगीत 1 से कंपेयर कर सकता है, 103 से कंपेयर कर सकता है. 1 से कंपेयर इसलिए कर सकता है, वहां विकेड एंड ब्लेसेड पीपल के बारे में तुलना किया, इधर भी है. So you can connect this psalm with psalm number 1. Why? Because psalm number 1 also speaks about the blessed and wicked. So psalm number 103 say you can compare this psalm. Why? It also speaks about steadfast love of God. Psalm number 103 speaks about steadfast love of God. Then Proverbs chapter 1 to 9 also speaks about wicked and wise. You can compare this psalm with, मेरा भी सिर दर्द होता है वो इसको देखता है. Psalm number 1, Proverbs chapter 1 to 9 speaks about wicked and wise. Then Jeremiah chapter 2 verse 13. There you can see fountain of living water. Fountain of living water. चश्मा है, पहना तो मेरा इधर दर्द हो रहा है, नहीं पहना तो आंख दर्द होता है. Jeremiah chapter 2 verse 13, fountain of life, living water. And of course when you speak from this psalm you can connect it with New Testament. यीशु मसीह किसी को दिया था ये पानी. John chapter 1 verse 4 to 9. इधर ऑलरेडी है. Jewish interpretation, according to Jewish context, they used to sing this psalm during the celebration of God's mercy. So यहूदी लोग जब उनका देश बिगड़ते जा रहा है या कुछ समाज में कुछ समस्या आ गया, ऐसा वाला समय में इस भजन संगीता को लेकर प्रार्थना करते थे. So the Jewish context, they used to take this psalm and they used to recite this psalm especially during the time of a prayer when even their nation is going through same kind of a situation. For Christians, we can take this psalm and we can use it in the present context. So मैंने ये जो बताने का समय ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का बारे में भी बता रहा, implication application for Christians. For example, we also live in a present context where wicked people are growing and righteous people are very less and very very hard to live. So same context we have today.
and we can ask, we can have a prayer for preserving those who are believing in जीसस. समझ आया? उन लोगों को बचा के रखना करके प्रार्थना हम कर सकता है. सो यू कैन कंसिडर इट एज एन एप्लीकेशन ऑल्सो. एप्लीकेशन लिखना करके बोला था, सो दिस इज एप्लीकेशन. देन दिस साम ऑल्सो स्पीक्स अबाउट different context of our life. Second, first one, moral awareness. हम जीने का समय कैसे वाला जीवन को हम जीना है करके इस वचन संहिता हमको दर्शाता है. क्योंकि बुरे लोगों को कैसा न्याय होगा, अच्छे लोगों को परमेश्वर कैसे संभालेगा, इस वचन संहिता में लिखा है. सो इफ यू वांट टू बी इन दिस गुड ग्रुप एंड बैड ग्रुप, दैट इज योर डिसीजन. रेवरेंस फॉर गॉड, फियर ऑफ गॉड, कैसा डरना है परमेश्वर से करके वचन संहिता हमको कुछ विजडम, बुद्धि का बातें सिखाता है. देन ट्रू ट्रस्ट एंड डिवाइन प्रोविडेंस, परमेश्वर हमको सब बातों को पूरा करेगा जरूरतों को करके वचन संहिता में लिखा है. कंपैशन एंड जस्टिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का गुण या नेचर क्या है इस वचन संहिता में हमको समझाता है. स्पिरिचुअल रिन्यूअल, आत्मीय रूप से हर दिन कैसा रिन्यू होना है करके भी इस वचन संहिता हमको सिखाता है. इतना बातें बताते हुए कंक्लूजन में भी ऊपर दिए हुए बातें है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. सो देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट. इंटरनल एविडेंसेस सेज दैट some tensions were happening in his land, in his kingdom. Then he offered a prayer. So it is a personal prayer, but for the nation. Personal prayer for the nation. So if there is any doubt, you can